points to what you just mentioned. So, a very basic Marxist understanding that the economic production style or method that's being used largely creates the socio-cultural form of whatever we believe in. So, I'm just trying to figure out the relation between the free market consumer societies that we are largely becoming a part of and vis-a-vis queer politics. To a large extent, this free market is sort of allowing or giving a free rein to queer politics, or is it, like, why are we able to talk about it now and not in other forms of economic production, mode of production? It's a very loosely sort of formed question, but it's something that Just to rephrase, if I understood the question, you're asking the link between queer politics and the free market, and why it's happening now. Is it because it's sort of being allowed? Yeah, why is the market allowing it to flourish? Okay. Only Yeah. now What is- that. Yeah. And that to a critique from Marxist, like what is? It's not a critique. I'm just trying to understand it better. Also, we are trying to locate everything to the categorization which has been given by the which has been given in the colonial period. But so many practices which were very problematic to women also existed before that, especially the Brahmanical practices. When they could keep the lower caste women, they could do anything with them. So when we are talking about when we are locating everything to that categorization of modernity, we are also undermining what happened before, what was happening before. So I think that should also be taken into consideration as it holds immense importance, because a lot of things were there. When I read Hindu Code Bill, then I read about कि कैसे जो Brahmins थे, they used to have children from the women of lower caste, and then she used to stay at their parental home for the rest of her life, and how her life was completely ruined because nobody then married her and give her protection, because she was made to live there for the rest of her life. So I think we cannot locate this problem to this categorization of modernity, because obviously, I mean, it is problematic, because categorization ke saath there came homogeneity, as you are saying that heterogeneous practices were dismantled. I mean, that is correct, but at the same time, matrilineal societies cannot be accepted as well, because then this is not equal. Okay. So you're saying that things were equally problematic back then. So it was not like a golden I past. mean, It's not like we had a really good position to We look cannot back. locate everything to modernity. We need to talk about Yes, just to keep it, because we have one question raised, so if we have one question addressed at one point, we can all address her question, and then we can take one more question, so there is a flow in the conversation. Anybody can respond. मैं एक point बोलना I say you want to, please show. आपने जो मार्केट और क्यूर के बीच में जो रिलेशनशिप की जो अभी चर्चा करी, मैं एक सोच रहा था कि मार्केट फंक्शन कैसे करती है, मार्केट की सोच क्या है, मार्केट कैसे लोगों को कैपिटलाइज करती है और कैसे इंडिविजुअल्स के एस्पिरेशंस को फुलफिल करने में मदद करती है और साथ साथ में उसको कैपिटलाइज करती है. तो प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग मेरे को तुरंत एक एग्जांपल ध्यान में आया जब आपने ये क्वेश्चन किया. जब चाइना और इंडिया का भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो इंडिया में बहुत चल रहा था कि बैन चाइनीज प्रोडक्ट्स, तो हम सबको ध्यान होगा. तो उस समय जो चाइनीज बिजनेसमैन थे, चाइना की जो मार्केट थी, वो मतलब हमारे भारत में जो लोग बैन चाइनीज प्रोडक्ट्स की टी शर्ट्स पहन के घूम रहे थे, और उसको बनाने वाला जो लोग था वो उसको मेड इन चाइना का टी शर्ट था. हमको लग रहा है कि हमको ऐसा फील हो रहा है कि क्यूर को प्रमोट कर रहा है मार्केट, लेकिन मार्केट के क्या इंटरेस्ट हैं क्यूर को प्रमोट करने के लिए, हमको ये समझने की ज़रूरत है. जैसे आपने बताया कि एक इंडिविजुअल जैसे प्रॉपर्टी जो इंडिविजुअल के हाथ में चली गई, तो मार्केट के क्या बेनिफिट्स हैं. तो मार्केट के डेफिनेटली बेनिफिट्स हैं जब लोग लिबरल बनेंगे, क्योंकि इकोनॉमी लिबरल है. जब लोगों में लिबरल सेंटीमेंट्स आएंगे तो कैसे एक कंज्यूमर कंज्यूम करेगा अपनी चीज़ों को, उस तरीके से मार्केट चेंज हो रही है. अब आज सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ें बहुत ओपन हो गई हैं, सजग हो गई हैं, तो उस चीज़ को मार्केट कैपिटलाइज करेगा. मार्केट को बस अपना प्रॉफिट से मतलब है, उसको मतलब नहीं कि क्यूर खा रहा है कि हिंदू खा रहा है कि मुसलमान खा रहा है, कौन खा रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता, खा रहा है मेरा प्रोडक्ट खा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है. सो प्रॉफिट
So are you saying कि जो queer are the new consumers? New They're consumers. consuming their products Profit. through marketing, But through then their this makes it t-shirts. a complementary through- relationship, right? It ये तो ultimately makes it a complementary relationship ये because तो kind of they market because it's so receptive to this new demand. Mhm. So they also get a chance to maybe demand more, and that is why it is somehow encouraging it also. So it's feeding into It's- that. Yeah, it's a good. It's in Nice support. observation. But like, what is the I would like to add one thing. Please. Yeah. Please. Go ahead. Yeah, sure. Okay. So with time, with various resistance and movements across various nations and all, right now you'll see that the June of month is celebrated as Queer History Month. Okay. You'll see how various companies completely change their logos to the LGBTQ flag Mhm. and showcase themselves as a new liberal, oh we are the cool companies, we are not like the old stuffy corporates. Mhm. Because with time, our own perceptions of various, like when it comes to queer politics, when it comes to women's rights, have changed because of the fight we have fought. And the companies have tried to capitalize on it. And Yeah. because of that, again, we are the new group to which they are we are the target group to which they want to sell their products to. A Mhm. new target group is not like the old conservatives. Mhm. So in order to switch the market, with the change in the market, that's what the companies have sort of taken on like a chameleon skin. They just change it, Mhm. and then as soon as like the queer history month, as soon as the month of June is over, they go back to the original logos that we see everywhere. Yeah. So it is allowed because of the fight we have fought, because our own perceptions and ideas have changed, and because of this change, the companies too have to change to a certain extent so that they can sell their product. It's a very, very important point. Yeah. The Thank you. same I was. Yeah. Anybody wants to add to? Yeah, please. So, what I'm saying is that a liberal condition, if we move from the traditional situation to the modern situation or the postmodern situation, now that we are in where feminism stands. So, if we are talking about free market and these capitalist, neo-capitalist, neoliberals, so what is the issue if their capitalization gives us space? Mm. Because it is not about we have to negotiate this politics anyway, and these situation that we are talking about it's an ideal time, Mm. and even if like if we call ourselves secular in India, it is not that we all are very much secular. Mhm. Even though we identify as secular, even though I identify as a feminist, Mm. I can never completely be that, Mhm. because I myself don't know what it is Mhm. completely. So if I use that label Mm. to push my politics forward, push a feminist politics forward, then what is the issue? I think using even if capitalists are using us to capitalize or Sell their gain whatever sell their profit they products. have, then we are also doing the same, and I think there's nothing wrong with that. I think And then that's what what she said, the complementarity of the two. Like, what's wrong in using a I think, but what we are ignoring is at what like what is the who's the bearing the cost? Where is the profit coming from? So someone is bearing the cost. Someone is bearing the cost of fast fashion. So are we ready? Are we comfortable with that idea? So are we comfortable with queer politics? I mean, so there would be demand being made, the products being made in a third world country, global south, and then people are consuming it in global north. So who's So bearing you're the talking for cost? the environment point of view. No, not environment. I'm saying in general, exploitation. Exploitation point of the view. labor. This again is called woke culture. What that means is companies pretend to be flag bearers of these Yeah. movements, but these companies would then in their backstage maybe fire someone for being pregnant. Right? Yeah. Just things like these. They don't stand for their values, but put on. Yeah, The similar exactly. thing is also So true, like- slightly different, but similar is true for green politics also. No? Companies turning suddenly green, posters will turn green, but the products remains more or less the same. So, taking from him, whatever point you made, I guess to a certain extent we can use the space that is being allowed to be given to us to push our own politics forward, our queer politics, our feminist politics, but to what extent? Because at the end of the day, this is a new form of capitalism that we are appropriating. So, and someone is bearing the cost, as that Amanda said. So, to what extent? This is pretty. It's a pretty dicey situation.
you with. There is no clear-cut answer from my perspective. Like, we can use capitalism for our own politics to move forward so that we can be seen, we can be heard. But it's not the end-all be-all because someone is going to bear the price. And it's not going to be us. Like then it will become a fight of like communities. So well, the queer community, at least the who has the social capital, who can use the capitalistic space, is using that space. But by using such a space, can we go back and dismantle the capitalistic system? That must also be thought about. I think one of the issues that we're not talking about is queer is not a very homogeneous category. So who are the people who will be deciding this? For whom these products are being made? So they will decide what constitutes queer as such, because those products will be made more. So that's one of the problems there as well. So I mean, the queer politics will take a certain, or the queer desire would take a certain form. So that is, I mean, inherently not even. Like for example, when it comes to queer politics, for like gay men have taken up a lot of space, Yeah. right? A lot of Yeah. their issues are being talked about. For example, lesbian or transgender issues are usually sidelined. Yeah. So then again, when we speak of the queer individuals who have the social capital, who could use the space allowed to us by the normal corporates, so whatever product that they may make will only be of use to the people who have the social capital to pay for it. It will not be used by the people down below or at the back of the room. आपने जो क्वेश्चन पूछा था, मैं बहुत छोटा सा 20 सेकंड में बताऊंगा। आप किसी भी रिलेशनशिप मार्केट में जब देखते हैं, दिस इज अ कांस्टेंट नेगोशिएशन। जैसे हस्बैंड और वाइफ में जब अधिकार की बात आती है, तो वहाँ पे जो मेरी जो समझ है, मैं इतना लिटरेचर नहीं पढ़ा हूँ फेमिनिस्ट लिटरेचर, लेकिन जो मेरी समझ बोलती है कि वहाँ पे कांस्टेंट नेगोशिएशन चल रहा होता है हर एक रिलेशनशिप में। तो आप अपनी स्पेस कैसे, आपका जो विचार है वो कैसे स्पेस क्लेम करता है, वो नेगोशिएशन है कि आप मार्केट में कहाँ स्टैंड करते हैं, और मार्केट आपको क्या ऑफर कर रही है और आप मार्केट से क्या ले सकते हैं, तो नेगोशिएशन। आई थिंक उसमें कहीं ना कहीं मार्केट की खूबसूरती है कि वो चॉइस कस्टमर को देता है। सो इफ यू जस्ट हाइपोथेटिकली अगर हम ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदें, एंड दिस इज वेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, कि हम ऐसे प्रोडक्ट खरीदें जो जेन्युइनली रिप्रेजेंट करते हैं मे बी क्वेयर इन टर्म्स ऑफ देयर डिसीजन मेकिंग, दे आर रिप्रेजेंटिंग इन द बिकॉज मार्केट इज ऑल्सो नॉट होमोजीनियस, राइट? सो देयर डिफरेंट सेक्टर्स एक्टिंग। तो उसमें अगर ऐसे प्रोडक्ट उन लोगों से खरीदे जाएँ, उनको प्रॉफिट शेयर या फिर उनके मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए, then there might be a shift. And this problem might not be just limited to queer in terms of जब भी एक हायरार्की में स्ट्रक्चर होगा, कुछ भी बेनिफिट्स है, कोई भी चाहे वो प्रिविलेजेस हो, चाहे पोजीशंस हो, वो हमेशा एक सेक्शन पहले ऊपर वाले अचीव कर लेते हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से। So what you said is absolutely right about gay men, and I think she has talked about this in piece also कि कैसे gay men when they are talking, like when they are interacting with media or corporate something, so people are not interested in listening to the work they are doing. So it's about, okay, like what is new with gay? So they're talking about the gayness more than the actual work they are doing. So if I think promoted in the position of decision making, that might like market will give you space for negotiation and Can I just try and yeah. come back to the Bring it. question? Yeah. First of all, answering, I was not talking about product consumption at all. I was talking about how the capitalist mode of production gives space for the question of queer politics to arise. Not as product consumption particularly, but as a larger mode of production. And why I was doing that was like compare it to say a feudal mode of production, where family is as a structure is extremely important. These patriarchal structures are extremely important. So there's barely any space to bring out questions. Vis-a-vis a capitalist mode of production where an individualization is also, a subjection is also an important tool to promote like even in terms of when you were saying that it's easier to have an individual owner, right, instead of a community ownership. So anything that leads to an individualization in identity is something that's not promoted but allowed by the capitalist mode of production. I was referring to that part mostly. And just one thing that when we talk about these fashion companies and corporations,
taking on queer colors, so as to say, although that's a very limited understanding of what queer implies. There's a clear distinction between consumers and the producers of take the company as the middle person, the consumers and the producers. So it's largely for the consumers. It's an appeal for the consumer space, not the production space. Like your labor, you're not talking about hiring queer people as into your labor market. You're only talking about making probably clothes or products which can be consumed. So another thing was that how also capitalist society will always restrain queer politics because I don't think it works this way. I don't know. I think you were talking about how the upper strata of society will. It's easier for it to grab, and then it's just not gonna trickle down. Only that upper strata is going to be able to take that up. It's easy for, say, I'm using the term, a first world country to bear queer flags than a global south countries because of the same reason that so it's not revolutionary in that sense. Queer politics is largely being quote unquote allowed in the mainstream ways that we understand queer politics within the capitalist mode of production. But to revolutionize it, I think we have to go deeper into the understanding of what we mean by queer politics, which even here it was being mentioned that it's a consistent transgression. It's not a new categorization. It's a consistent transgression from any kind of categorization that in itself can be revolutionary. And how comfortable was this idea when she said that everybody is queer? We are moving towards breaking identities, categories. That's what we're understanding, and in some way we all are queer. Yeah. So how is that landing on everyone? Is it? I think it's just marking towards a fluid identity. Yeah. Largely, it's talking like about opening up a space. fluidity within identity, which I feel has its own problems when we base it in the largely identity-driven zones that we individually exist in. That fluidity when taken in terms of, like, say, this entire room full of people, all of us today, I don't know, is it even possible to consciously decide and be identity fluid? Yeah. Versus me as an individual interacting with society at large, and I consider myself to be fluid, identity fluid, not just gender fluid, identity fluid at that point. But that identity is not coming from within, right? That identity is coming from outside. Exactly. So how viable is it to just proclaim yourself as queer is another question. I think, but like there's what I have understood, like any sort of rights, talk about rights, has to do with some form of identification and representation. When we go into that realm, then we are going into the realm of institutionalization and then into the liberal framework. Once we enter into that, so like I don't think there is anything that can be fluid as such, because you want representation. So there's like some things are at stake. So change can happen, but I think there will be points where there will be no change. I feel, because I mean Foucault does talk about de-individualization. He says that I mean all these forms of politics, they are like focusing on concretizing their identity. So you'll have to, like, when you talk about gay men, you'll talk about like lesbian women or other things. Like, so you do associate certain categories with them. Already you have certain things in mind, and their rights would have to do with those categorizations. So how critique to that is exactly what he said about 33% representation for women, right? You do that, and which queer people, which amongst the queer community get that? Like the moment you lose an identity representation, there's another caste class significance that comes in, right? I think it's a larger debate. So I'm saying that just it's saying that something. you get stuck there in this line of thought. This is an interesting debate. I just reminding me of Gopal Guru's reading, which we did. He talks about who represents whom. If I'm not wrong, who has said this, but the question is, if we take identity, अगर हम identity consider करेंगे, या तो gender identity, हम लोग कोई भी identity को fluidity consider करेंगे, तो फिर इसका representation कौन करेगा? कौन है जो उनके behalf में बात करेगा? If we consider everybody queer, then who will actually speak of queer rights? This is not just queer, like, problem. There's no so this is the problem कि कौन किसकी identity छोड़ देंगे
या तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, जैसे उन्होंने कहा कि राइट्स की बात कैसे हाँ. होगी. So this is, I think he has addressed this Gopal Guru. I'd like to carry forward his argument in. Oh, sorry. Okay, good. She raised her hand. Yeah, so like when she's saying that everybody is queer, right? Isn't that also posing kind of a fixation, right? Like that is also kind of imposing, like, you know, I'm not saying that is inherently bad or anything, but who is she to decide that all of us are queer, right? Or all of us Yeah. do identify to one And who kind defines of what's queer? Yeah. Oh, yeah. Also another point, like when you said, right, Plato ka cave wala theory. So Plato in that sense, you know, he's defined lived experience. Because if my lived experience is like that, right, like I'm seeing only shadows of people going behind, my world will be like that. Now if someone from, like in the case of colonization, you know, someone from the first world country comes and tells me that, you know, your society is traditional, Primitive. it's not, yeah, it's primitive. So underdeveloped. So what will I do? Like Plato ka criticism comes from there only, that he talks about things that are transcendental, like they do not belong in this world only, forms and ideas, like how will you relate to it in the world? Right, so that's also another thing, because I think it's very important in feminism to, you know, take into account the lived experience of each and every one. True. I think that's what feminism mostly consider. That's why काफी studies lived experiences, consciousness raising, उनके जो sessions होते हैं उनमें they mostly talk of lived experiences. They do consider that point. It's a very important point. आप बताएं please. Sorry, yeah, yes, kind of, maybe if I'm able to grasp what he was trying to say. I thought of something in Nivedita Menon's own words. So, United Nations has actually kind of tried to define what transgender is. So obviously among queer groups there's a lot of argument regarding that. You can just define, and especially उसमें problem है कि they only say look at men who dress as women. So ये सब है. So Menon said, so there are so many complications, we just cannot keep track. But what she said to a reply to that is like, when you are negotiating with the state, when you're asking for rights from the state, you have to produce a category. However problematic it sounds, you have to give state that. This is applicable for everything. This is applicable for caste groups. Like we know what problems are there when you try to categorize anything, especially such a complicated caste structure in India. But when you're asking, say any sort of favor is not the right word, but any sort of representation, whatever, anything from state, there has to be a space for categorization. So it's like इसका कोई critique या ऐसा कुछ नहीं है, but that will be there. I think holding the identities will help. Like I think one of the issues that we are, like, I feel like that we are ignoring is how we take capitalism as the backdrop of everything. So like it's happening, capitalism remains constant. So representation happens within the capitalist structure. So state remains there, everything remains there. We're not talking about dismantling them for representation to be very different. That could be one way of looking at the politics. That's a very deep question, but true. So that's one way of maybe like dismantling the structure and then. कंसेप्ट है ना, लिबरल कंसेप्ट में एक आदमी जाता है फैक्ट्री में काम करता है ना, काम करके आता है, उसका जो सैलरी होता है कैसे तय होगा, मतलब 6,000, 10,000, वो दो धारणाएं तय करनी है. एक तो ये है कि वो आदमी जो काम करता है उसका सैलरी तय किया जाए कि उसके जीने खाने पीने पर कितना खर्च हो रहा है. दूसरा एक अंदर कम्युनिज्म एक कंसेप्ट डेवलप हुआ कि एक मजदूर जो है फैक्ट्री में जब काम करने जाता है तो काम करना, और तो इसलिए काम कर पाता है 8 घंटा 16 घंटा, तो उसके बैकग्राउंड में उसका सब काम करता है कोई, उसकी पत्नी खाना बनाती है, कपड़ा साफ करती है, और अगर उसको सब करना पड़ेगा ना, अब वो 16 घंटा नहीं कर पाएगा, 12 घंटा नहीं कर पाएगा, तो वो इतना टाइम नहीं दे पाएगा. तो इसलिए जब वेज की बात होती है तो लोग बोलता है कि इसमें उसके परिवार का जो खर्च है वो भी इंक्लूडेड होना चाहिए. भारत में नहीं मिलता, लेकिन बाकी कुछ जगह ये डिमांड है, कुछ जगह मिलता है. लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये जो पत्नी का जो वेज, वाइफ का जो वेज इंक्लूड करने का जो बात है, एक कोई भी मर्द के किसी लेबर में है ना, लेबर का जो वैल्यू है उसमें उसका पत्नी का भी लेबर वैल्यू इंक्लूड करने का बात, ये इंडिविजुअलिटी के साथ आता है. डेमोक्रेसी में जो सबसे अच्छी चीज़ एक आई वो इंडिविजुअल राइट की बात करता था, है ना, इंडिविजुअलिटी की बात करता, जो आपने बोला अभी, मुझे लगा आपको क्वेश्चन का आंसर पता था. इंडिविजुअलिटी के साथ है, उस इंडिविजुअलिटी में वो इंडिविजुअल राइट्स में लिबर्टी तमाम चीज़ का जो वादा करता है, तो अब हर एक आदमी की इंडिविजुअलिटी के आधार पर लिबर्टी देंगे, ठीक है,
तो कोई व्यक्ति होमोसेक्सुअल हो सकता है, कोई क्यूर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जो कन्फर्टेशन था, क्योंकि एक कैपिटलिज्म को डेवलप होने के लिए एक बहुत यूनिफाइड यूनिफॉर्मिटी वाला सोसाइटी चाहिए था, जहाँ पे किंगशिप और राज्य सत्ता का जो है बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा डिवाइडेड नहीं, यूनिफॉर्मिटी चाहिए था। तो ये ओवर द टाइम ऑफ पीरियड में नेशन स्टेट में जब देश बदला, जब छोटे छोटे रास्ते आए थे, तो वो सफल हो पाया। लेकिन कैपिटलिज्म का जो इंडिविजुअल का राइट है और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था फ्यूडल सोसाइटी में, जो राजत्व का जो कंसेप्ट था, जो फैमिली का कंसेप्ट था, वो अभी तक कॉन्ट्राडिक्शन में है। इसलिए आप देखिएगा कि वुमेन का राइट भी बहुत सारे देशों में धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ। रिजर्वेशन के फॉर्म में समझ लीजिए, अफर्मेटिव एक्शन के रूप में समझ लीजिए, या फिर इवन क्वीर का जो इंडिविजुअलिटी के तौर पर कैपिटलिज्म तो स्वीकार करता नहीं है कि इंडिविजुअल राइट है ना, डेमोक्रेसी स्वीकार करता है, लेकिन फिर भी नेशन स्टेट में बहुत साल लगा दिया राइट देने में कि आप जीत कर सकते हैं, आप रह सकते हैं, आप अपने आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये जो कंज्यूमराइजेशन का बात है, मुझे लगता है कि जेंडर के तरीके से सोचना हो जाएगा। हम क्यों सोचते हैं कि अगर कोई हम लोग के बीच कोई फील हो रहा है ना, तो आप कह रहे हैं कि एवरीबॉडी फील है, उसका अलग से कंज्यूमराइजेशन क्या होगा, मतलब हम लोग जो खाते हैं वही खाएगा, हम लोग जो पहनते हैं वही पहनेगा। तो मुझे लगता है कि कैपिटलिज्म का अलग से कुछ पॉलिटिक्स को स्पेस देने का कंज्यूमराइजेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है, बल्कि उसका जो फंडामेंटल जो मैनिफेस्टेशन है वो नेशन स्टेट के आधार पर है, जिसका आधार डेमोक्रेसी है। उस डेमोक्रेसी में इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, इंडिविजुअल राइट को। मुझे लगता है इस आधार पर वो मजबूर है देने के लिए, वरना उनका कंज्यूमराइजेशन का कुछ है नहीं। दूसरा एक बात जो था, आपने बोला था किसी, मैं नाम भूल गया, जो फेमिनिस्ट थ्योरिस्ट है, क्या नाम है, निवेदिता हस्कर का मेरे नाम शायद, जो बोला था कि मेंस्ट्रुएशन अगर मर्द को होता, ग्लोरिया स्टाइल, ग्लोरिया स्टाइल, ग्लोरिया स्टाइल, ग्लोरियस टाइम है, ग्लोरिया। हाँ, तो ग्लोरियस टाइम ने जो बोला, ये हिस्टोरिकली बहुत काउंटर फैक्चुअल है कि अगर मेंस्ट्रुएशन मर्दों को होता, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन मर्दों को होता, मेंस्ट्रुएशन का जो पूरा मतलब ये लिंक है, वो तो रिप्रोडक्शन सिस्टम से है ना, मतलब महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन होगा, एक खास तरह का प्राइवेट पार्ट होगा जिसमें बच्चे गर्भ रहेंगे, है ना। तो हिस्टोरिकली काउंटर फैक्चुअल क्यों है, क्योंकि जो लोग रिसोर्सफुल होंगे वो सब्जुगेट होंगे, है ना। ये देशों के साथ भी लागू होता है, जानवरों के साथ भी, इंसानों के साथ। इसलिए आप देखेंगे जो लोग रिसोर्सफुल होंगे वो सब्जुगेट होंगे, उनके पास रिसोर्सफुल होगा वो सब्जुगेट होता चला जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि आप देख लीजिए कि जैसे जानवरों को उदाहरण लेते हैं, जैसे आप देखते हैं कि हम लोग गोट्स पालते हैं, सीप पालते हैं, तो गोट्स को जो है मारते नहीं है, क्यों? क्योंकि गोट्स का क्या काम है कि वो लगातार बच्चे पैदा करे, है ना, और फिर उसके जो मेल होते हैं उसको काट के हम लोग खाते हैं, लोग खाते हैं। फिर आप देखेंगे बैल को देखिए, बैल को आप देखेंगे तो जैसे हुआ क्या कि पहले बैल भी काम आता था खेती के, यहाँ गाय तो दूध देने का काम आती थी, हालांकि गाय आदमी के लिए दूध देती नहीं है, वो अपने बच्चे के लिए देती है, लेकिन रिसोर्सफुल है इसलिए आपने उसको सब्जुगेट कर लिया ना। बैल जो आपको खेतों में हल जोतने काम आता था इसलिए भी सब्जुगेट हुआ। आप देखेंगे कि जो वो जो भैंस का बच्चा होता है, तो भैंस पालते हैं, लेकिन भैंस के बच्चा को कोई देखेंगे कि कोई पालता है नहीं, क्यों? क्योंकि वो इतना काला होता है तो वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो वो अगर खेत में अगर जोतेंगे तो हाफने लगता है, थोड़ा सा खेत जोतने के, इतना खेत जोतने में हाफने लगेगा, तो वो किसी काम का ही नहीं है। तो उसके पास कोई ऐसा प्रोडक्टिविटी है ना प्रदान करने का कैपेसिटी नहीं है, इसलिए आप उसको आपके किसी इस्तेमाल में नहीं है। तो आप देखेंगे कि जस्ट अगर ये करते हैं कि जैसे भैंस जो है फिर से रिप्रोड्यूस करे बच्चा, इसके लिए गांव में कुछ भैंसा को कान काट के छोड़ देते हैं, लेकिन उसको पालते कोई नहीं है, उसको गर्दन में रस्सी लगा कोई बांधता नहीं है ना, और उसको छोड़ देते हैं। आप बाकी सबको कटने के लिए भी देते हैं ना, नीचा खाने जाते हैं, चाहे बहुत बार ऐसा होता है कि आप दूध नहीं पिलाते हैं इसलिए वो मर जाता है। तो आप देखिए कि किसी भी व्यक्ति का अगर मर्द के पास मेंस्ट्रुएशन की कैपेसिटी होती तो बच्चा पैदा करता, तो वो भी महिला की तरह सब्जुगेट होता। तो ये एक इंडिविजुअलिटी डेमोक्रेटिक सोसाइटी और प्रोग्रेसिवनेस का बात है कि आप इक्वल रिस्पेक्ट दे रहे हैं, देना चाहिए इस आधार पर कि मेल के पास तो रिप्रोडक्शन करने की क्षमता है ही नहीं, है ना, फीमेल के पास है। तो अगर किसी के पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी है तो उसको आप डिग्रेड कैसे कर सकते हैं, उसको उसके पूरे जीवन को पूरे रहने सहने तरीके को डिमोनेट कैसे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो जो हम लोग, जैसा मैंने आपका सवाल अगर समझा, जो आपका पॉइंट समझा कि स्पेशल जिसको आप बोल रहे हैं कि उनके पास स्पेशल कुछ ऑर्गन्स हैं, स्पेशल क्वालिटीज़ है, जो रिसोर्स है, उसकी वजह से सब्जुगेशन है ना, तो मेंसेस की वजह से तो प्रॉब्लम होती है।
सोशल नहीं, लेकिन क्योंकि ये सोशल आप वो जो काउंटर फैक्टर इसलिए हो रही है, वो बोला कि मेल फर्टिलिटी मेंस्ट्रुएशन का पूरा लिंक किससे है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है। अगर मेल के पास ये होता तो मेल भी बच्चे पैदा करने की स्थिति में होते, उनके पास भी क्षमता होता है ना। नहीं, लेकिन तो ये पूरे उनका जो क्षमता होता है ना, तो I आप बताइए think, कि महिलाओं का सब्लिगेशन क्यों है? वो सेक्सुअलिटी के कंट्रोल के ऊपर ही उनका सब्लिगेशन है ना, उनका कंफाइनमेंट है। सेक्सुअलिटी कंट्रोल क्यों है? क्योंकि वो बच्चा पैदा करे, वो प्योर डिसेंडेंट हो ना, प्योरिटी का जो कंसेप्ट है वो आप इसलिए उनको कंफाइन कर देते हैं ना, जितना फ्रीडम हमको उतना नहीं है, ठीक है। तो ये जो इस तरीके वो जो उसका इसलिए है कि उसकी एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स है, तो आप इससे मर्दों के पास नहीं हो सकता है। नहीं, लेकिन तो बायोलॉजिकली आप बायोलॉजिकल उसका एक रीजन दे रहे हैं कि बायोलॉजी की वजह से नहीं मैं जस्टिफिकेशन मुझे नहीं दे रहा हूँ कि उनका सोसाइटी सही, मैं बोल रहा हूँ कि सोसाइटी का अपना तरीका है सोचने का, समझने का, वो गलत है। किसी मतलब वुमेन्स बीइंग में किसी व्यक्ति के पास एक्स्ट्रा क्वालिटी हो तो वो समाज में ज़्यादा रिस्पेक्टेबल होना ठीक चाहिए। है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ You were saying something. yeah, so मैं ये कह रहा हूँ Yeah, I was saying कि I don't think Gloria's stand इसको historically counterfactual है, किसी भी तरह से हम स्क्विड ये कह करने रहा की हूँ कोशिश उनका कर ये रही है। कहना कि मर्दों के पास अगर मेंस्ट्रुएशन कैपेसिटी होती तो वो ग्लोरीफाई करते, चाहे उसको अपनी गुड तरफ यूज तो आप उससे एग्री नहीं करता, बेसिकली बोले कि हिस्टोरिकली करेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं होता। दैट्स योर पॉइंट। काउंटर फैक्टर Counterfactual। नहीं कर रहा है, उस ठीक पे है। इमेजिनेशन कर ठीक है, वो इमेजिन करके बना के ऐसा होता तो वैसा मेल होता। पावर स्ट्रेंथ उसको Let her speak. okay she was speaking first. Yeah. Yeah, so I'm saying कि I don't think she's saying कि historically correct है कि नहीं है, ठीक है? What she's trying to say कि how things are constructed around कि if something like this is happening to a man, अगर the piece it starts with this thing, उस line से start होता है कि the elites के पास जो भी attributes हैं, जो भी powers हैं, वो हमेशा एक upper pedestal पर रखे जाते हैं society में. That's where she starts the point. So whether it's menstruation, whether it's the color white, वो यहाँ पे example लेती है color white का, because दो color black जो है वो एक actually biologically एक lower hierarchy में है, because you are less prone, you are more prone to skin cancer etc. diseases. But still you justify being color white as being superior, racially superior. So in that same sense she uses this example कि ये construct किया जा रहा है कि किस तरह से इस कॉन्सेप्ट के अराउंड में अगर कॉन्सेप्ट यही मेल्स की से एसोसिएट होता फीमेल्स की जगह पे, देन यू वुड बी सेइंग कि बिकॉज वी आर मेंस्ट्रुएटिंग इन अ 29 डे साइकिल, बिकॉज चांद जो है वो 29 डे के साइकिल पे है, तो हम मेंस्ट्रुएट कर रहे हैं 29 डे के साइकिल पे, दैट्स व्हाई वी हैव दिस पावर टू कंट्रोल दीज एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज एंड एटसेट्रा. सो हम किस तरह से मीनिंग डिफाइन करते हैं उन चीज़ों के लिए जो भी हमारे आसपास घटनाएं हो रही हैं, हम उनमें किस तरह से असाइन करते चीज़ें, बिकॉज द सोसाइटी वुड बी वेन कंट्रोल्ड, स्टिल इट विल बी अ पेट्रियार्कल सोसाइटी. तो हम उनमें डिफरेंटली चीज़ें असाइन करते हैं, ना कि इस तरह से जैसे हमने असाइन कर रखी है. इट्स जस्ट वन एग्जाम्पल दैट शी इज गिविंग. शी इज नॉट सिचुएटिंग इट हिस्टोरिकली करंट लेस में सिचुएट नहीं कर रही है. शी इज जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि किस तरह से हम चीज़ों को सिचुएट करते हैं अपने अराउंड पावर स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द पावर स्ट्रक्चर. जो पावर होल्ड करता है वो डिफाइन करता है कि सोसाइटी किस तरह से ऑर्गेनाइज होगी और किसी चीज़ के अराउंड हम किस तरह से सोचेंगे. वही सेम चीज़ जिसके बारे में हम लाइक, तो ये एग्जाम्पल सिर्फ इतना है कि menstruation could have been a very different thing अगर ये एक अपर जो उस इंसान से जुड़ा होता है जो पावर में है. That's all she's saying. She's not listening. अच्छा, It's done. so I think आप बोल रहे थे कुछ? Yeah, I was just saying कि masculine power like strength वो तो historically accepted है ना. Historically बोला जाता है कि male are Yeah, more that is also powerful. resourceful in So, a way. and yeah, it's resourceful, That's not but that has not been the case. So historically it's wrong then. very simple. Let's move beyond who is right and wrong. लेकिन Not who is right देखने and का wrong. तरीका है. So I'm just saying कि historically भी Yeah. नहीं, Yeah, yeah, what is yeah. arguing also right कि historically ऐसा हुआ नहीं है, so you can't say. She's just interpreting in a multiple ways. मैं इसको पूरा काउंटर फैक्टर होता है, मतलब चीजें बताई जाती है मेथोलॉजी में. जैसे कि मैं ये बोलूँ कि अगर मुगल नहीं आते हो सकता है अच्छा होता है, तो बुरा होता आई डोंट नो, बट आप थोड़ा देर के लिए ये सोचने लग जाते हैं कि कुछ तो गलत हो गया ना. हाँ, मैं ये बोला कि हिस्टोरिकली नहीं बोला, मेरा काउंटर फैक्टर है. दूसरी बात मैं कहा था कि आप जो कह रहे थे मेल मेस्कुलिनिटी का बात, एक अपर कास्ट आदमी के सामने कोई वर्कर जाकर बैठता है तो आप उसके बैठने के तरीके में, रहने के तरीके में पूरा फेमिनाइन तरीका देखेंगे ना, इसे बैठता है. मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो यूनिवर्सल कैटेगरी नहीं है, उसको बहुत बुला रही चीज़ है, तो ठीक है.
इसमें भी आई थिंक उन्होंने एक चीज़ जो आप लोगों ने मेंशन की उसमें बोला है निविदा मैनन ने कि जो जिसको हम नॉर्मल बॉडी को किसको बोलते हैं, बॉडी वाले चैप्टर में बात की कि हम नॉर्मल बॉडी किसको बोलते हैं, जो चल सकता है, जो देख सकता है। तो ये बोला कि अगर because this is the world which is constructed by people who are जो are in the position of power to defining the world. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाए और सडनली लेट्स इमेजिन कि वर्ल्ड इज कंस्ट्रक्टेड बाय पीपल हु आर ऑन व्हील चेयर एंड दे आर नॉट एबल टू सी, और कलर ब्लाइंड पीपल, तो उनके वर्ल्ड में जिसको हम नॉर्म बोलते हैं उनको नेविगेट करना मुश्किल हो जाएगा। दे वोंट बी एबल टू फाइंड द साइन बोर्ड्स, क्योंकि ऐसे साइन बोर्ड्स होंगे चारों तरफ, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे। सो हु इज डिफाइनिंग द मीनिंग, व्हाट शी सेड, यू सेड कि हु इज डिफाइनिंग द मीनिंग, वो डिफाइन करते हैं कि क्या नॉर्म है, जिसके पास पोजीशन, जिसके पास पावर है। मैंने बेसिकली मैं जो कह रहा था ना कि वुमन का शब्द इसमें इसलिए रिसोर्स बोले, मुझे लगता है थोड़ा सा मैं गलत कर रहा हूँ। इसलिए मैं कि निविता मैम एक बात बोलती है कि मतलब कैपिटलिज्म में हम लोग लाख बुराई कर रहे हैं, कुछ देता है ना, जैसे इंडिविजुअलिटी का जो राइट है, इसमें महिला को पढ़ने का अधिकार हो गया, संस्कृति का अधिकार मिलता है। उसी तरीके से ये मतलब जैसे कि एक तो कंस्ट्रक्टेड आइडिया है ना जेंडर का, जिसमें महिलाओं का एक अपना स्थान है सोसाइटी में जैसा। मुझे लगता है कि इस समय में आके हम लोग तो चीज़ों को समझ रहे हैं, तो मर्दों के पास तो रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी नहीं है ना, औरतों के पास है, उनके पास है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मॉडर्न स्टेट में आने के बाद जब मजबूरी में ही सही, जब राइट टू इंडिविजुअलिटी का देता है, उसमें महिला अपना भी अधिकार मांगने तक प्रोफेसर तक बन जाती है ना, इस तरीके से उसको भी ये रिलैक्स देना चाहिए कि इस स्टेट्स में हम हमारे पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, हमको इसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। जैसे हम मॉडर्निटी में राइट टू इंडिविजुअलिटी एक्सप्लॉइट करके प्रोफेसर तक बन जाते हैं ना, पढ़ाते हैं, प्रोटेस्ट भी आप लोग कर लेते हैं, तमाम चीज़ कर लेते हैं, उस तरीके से इसको भी एक्सप्लॉइट करना चाहिए। इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए कि ये एब्सोल्यूट हमारे लिए कोई हानिकारक है। वो मतलब जो वर्क करते हैं, जो लेबर करते हैं ज़्यादातर है ना, वो पढ़ते लिखते नहीं है, क्योंकि जिसके पास लेजर टाइम होता है वही पढ़ लिख पाता है। लेकिन दोनों के लेबर में और दोनों के आउटपुट में कितना अंतर हो जाता है। कोई बैठ के कहीं कुछ और करता है, कोई लेबर करता है, उनके वे ऑफ लाइफ में। मुझे लगता है कि ये रिसोर्स है, इसको ऐसे डिवीनिंग रूप में मुझे बोलने में मुझे लगता है आ गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें इन्होंने एक जगह बोला है कि अपनी बॉडी को वुमेन कैसे यूज़ करती है। आई थिंक इफ यू रिलेट टू दैट पॉइंट कि वुमेन बॉडी को कैसे यूज़ करती है, उसकी फ्री चॉइस है। अगर उनको मार्केट में जाके इंक्लूडिंग सेक्स वर्क और ऑब्जेक्टिफिकेशन या फिर किसी के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बिकनी मॉडल बन रहे हैं, तो फ्रॉम दैट डेफिनेशन दे आर यूजिंग देयर रिसोर्सेज, और वो फ्रीली चूज कर रहे हैं। और उससे अगर दे यूजिंग मार्केट एंड देयर बॉडी टू मूव अहेड इन लाइफ, इज दैट ओके, इज दैट अ फ्री चॉइस? आई थिंक शी हैज अ डिफरेंट टेक ऑन दैट। वो बोलते हैं कि वो जो फ्री चॉइस है वो इंडिविजुअल एटमिस्टिक फ्री चॉइस नहीं है, इट्स ऑल्सो वेरी कंस्ट्रेंड। तो मार्केट उनको बहुत लिमिटेड चॉइस देता है। एंड देन ऑब्जेक्टिफिकेशन और कमोडिफिकेशन पे शी हैज टॉक्ड अबाउट आल्सो, शी एड्रेस दैट। अदरवाइज तो सेक्स वर्क भी फ्री चॉइस है, and which is Catherine McKinnon works on this idea कि sex work is actually not a free as it's shown ना, कि free enterprise है जिस तरह से भी जो चाहे। She's like there is very limited economic possibilities for those people who are opting for it, first thing, and second, even when they are in it, when they are performing it, there has been constant exploitation of their bodies, constant exploitation of even the work that they are choosing. Like even at that point of choosing that work to do, like they are choosing that to do that work, at that time they are not given the rights. Okay, you are denying them rights because they are sex workers. So that's another thing she talks about. Yeah, I agree with that. Yeah. Is there anyone who wants to add or raise any issue? Because this, we have reached to the end of that time which we have. I just have a suggestion. Please. Yeah. That is it possible that you could take smaller text? Because I think discussions would be more centered. Like this was a huge text. Yeah. Discuss, like, Actually, the one who presents, that person chooses the text. So we can do that. We can have an article and talk on that. And we Yeah, can do continue one by- thing like by which we can do like we can choose a certain paragraphs or the pages like 1 to 30 or ऐसे करके of a book also if we Actually, want to cover it. anyone can volunteer to present, anyone can volunteer like Just do it anyone your way. as There's a- no give us constant suggestions. essay. We'll see what are the suggestions, if there are so, like Exactly. number of suggestions, and we can choose any one of those like smaller text. So any of you are willing to, like if you want to present any text or any smaller text or book, so That you would can be submit. Yeah. Next You can session. take a larger text once a month
and smaller text if you're having it once a week. Yeah, Yeah, exactly. So once a week we can take a smaller text. It's completely You can And also if- do chapter wise, no? Yeah, exactly. That's what I was saying. Maybe Chapter Because couple of it is- chapters or something. Yeah. it is- Yeah. Need not go for articles. Absolutely, yeah. So, if somebody wants to present something which they have read in the next session, they can volunteer now also.